Hello students, in last video we saw epsilon delta definition of limit, right? And in that video we saw that a function fx, okay, is said to have limit L if for epsilon greater than 0, okay, if for every epsilon greater than 0 there exists a delta, okay, a delta greater than 0, or you can say in place of delta, for every epsilon if there exists a delta neighborhood, okay, a delta neighborhood, right? Okay, so a function f of x is said to have limit L if for every epsilon there exists delta neighborhood, okay, or delta simply, okay, such that difference between fx and minus L, okay, difference between fx and L is lesser than epsilon, okay, in delta neighborhood, okay, delta neighborhood is written as x minus a less than delta, okay, so when x minus a is less than delta, or we can say that a function f of x is said to have limit L if for every epsilon greater than 0 there exists a delta neighborhood such that difference between fx and L is less than epsilon in delta neighborhood of a, राइट? सो क्या होना चाहिए कि अगर कोई एप्साइलन हो, ठीक है, इसके लिए कोई ना कोई, ठीक है, एप्साइलन ये ग्रेटर देन 0 है, किसी भी नंबर के लिए कोई भी नंबर अगर आप लो तो इसके लिए कोई ना कोई डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट होना चाहिए, एक इंटरवल मीन्स एक इंटरवल एग्जिस्ट होना चाहिए अराउंड ए, ठीक है, एक इंटरवल एग्जिस्ट होना चाहिए अराउंड ए सच दैट इन दिस नेबरहुड, ठीक है, जो भी एफ एक्स की वैल्यू आएगी इस नेबरहुड में, ठीक है, उसका डिफरेंस एल से एप्साइलन से छोटा होना चाहिए. अगर ये सब होगा देन वी विल बी सेइंग दैट एफ एक्स इज हैविंग लिमिट इक्वल टू एल. ओके, वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, इफ फॉर एवरी एप्साइलन, ओके, if for every epsilon there exists a delta neighborhood or simply you can say delta, ठीक है, हर एप्साइलन के लिए, एप्साइलन इज अ नंबर, राइट, विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, कुछ भी हो ये उसके लिए एक ऐसा डेल्टा या डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट होना चाहिए जिसमें कि एफ एक्स और एल का डिफरेंस एप्साइलन से छोटा हो, ठीक है. तो जब भी आपको प्रूव करना हो कि लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है तो यू आर गोइंग टू टेक एप्साइलन ग्रेटर देन 0 फर्स्ट, फिर आप इस एप्साइलन के लिए यू आर गोइंग टू फाइंड आउट डेल्टा और डेल्टा नेबरहुड, ओके, सच दैट this difference is less than epsilon in this delta neighborhood, or delta neighborhood can be written as x minus a less than delta, right? So keep this thing in your mind. Okay, this is what we learned in the last class. Actually I forgot to associate this delta neighborhood with the limit thing, right? So initially I gave you definition of delta neighborhood, but I ultimately didn't relate it to the definition of epsilon delta definition of the limit. So that's why I told you this one more time, right? So now moving further, okay, moving ahead, we will be proving a result, right? We are going to prove a result on limit, okay, which says, okay, let me write it here, theorem 1, okay, theorem 1, okay, it says if limit of fx when x is approached to a exists finitely, okay, exists finitely, right, that means this limit is finite, okay,
this is not equal to infinite, this is not plus infinity minus infinity, but it is finite, 0 1 2 3 or some kind of number, right? Okay, so if this limit exists finitely, then prove that it is unique. Okay, then prove that it is unique. Okay, we are going to show this result, right? Unique means limit is one only, there cannot exist two limits. Okay, so how we are going to prove this? We are going to start from the two numbers, right? Okay, we are going to start from the assumption. Okay, ठीक है, assume कर लेंगे कि suppose इसकी दो limits हैं, फिर ultimately we are going to prove that both the limits are equal. Okay, so if possible, write down it possible, if possible, suppose it has two limits. Okay, this function has two limits, that is one is L and another is L dash. ठीक है, ओके, suppose कर लो कि इसकी दो लिमिट्स है L and L dash, and finally we will be proving that both the limits are equal. Okay, so if possible, suppose limit of limit of f of x approaching to a is equal to L, and limit of x approaching to a is also equal to L dash, right? So suppose it has, you can write, suppose it has two limits. Okay, right? So one is L, that is L and L dash, right? So therefore this will be equal to this and this will be equal to this. Okay, so now do what? Since limit is equal to L and L dash, so we know by definition, if limit of this function is equal to L, then for every epsilon greater than 0, there exists a delta. Okay, such that, okay, let me write it here, since limit of x tending to a f of x is equal to L. Okay, therefore for every epsilon there exists a delta or delta neighborhood such that difference between fx and L is less than epsilon when x is belonging to delta neighborhood, that is when x minus a is less than delta, right? Okay, is it clear? Yes. Okay, so most of the time, okay, we should almost all the time we should take deleted neighborhood here, right? So it must be greater than 0. Okay, so because a must not contain in this, because for a function f of x many a time is not defined, right? So that's why I'm just writing the simple neighborhood, okay, for simplification. So now, so secondly also, okay, you just keep this thing in your mind. Okay, इसका क्या मतलब है कि देखो ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा? ठीक है, when x is belonging to a certain neighborhood. Okay, this delta neighborhood, right? So this is a minus delta and this is a plus delta and this is a. So इस neighborhood में this is lesser than epsilon. Okay, secondly also limit of x tending to a f of x is equal to L dash भी है. So then therefore for epsilon greater than 0 there exists another delta, right? So I'm denoting it by delta dash. Okay, so इसको आप delta 1 कर लो और इसको delta 2 कर लो instead of delta dash. Okay, so it is delta 2 such that this is delta 1, right? So such that
f of x minus L is less than epsilon when x minus a is greater than delta 0 minus a less than delta 2. It means in this neighborhood a is here, a minus delta 2 and a plus delta 2. ठीक है, इस neighborhood में और in set of points में से, okay, in this set of points this difference is less than epsilon, right? Okay, so I'm going to do what? देखो यहाँ पे डेल्टा अलग अलग है, यहाँ पे डेल्टा 1 है, यहाँ पे डेल्टा 2 है. सो अगर इफ़ आई देखो इनमें से दो नंबर है डेल्टा एंड डेल्टा 1, इनमें से छोटा बड़ा होगा कुछ, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द स्मॉलर, ओके, एंड दिस इज द ग्रेटर, ओके, दिस इज द ग्रेटर इंटरवल, दिस इज द स्मॉलर इंटरवल, तो यहाँ पे कहीं आएगा, इसके अंदर कहीं आएगा a माइनस डेल्टा 1 और यहाँ पे आएगा a प्लस डेल्टा 2. तो इफ आई कंसीडर दिस इंटरवल, ओके, दिस नेबरहुड, इस नेबरहुड के लिए दोनों डेफिनेशन 1 एंड 2 दोनों इनइक्वालिटी राइट होगी, ठीक है. ये बड़ी इनइक्वालिटी भी और ये एल डैश है, ओके, ये बड़ी इनइक्वालिटी भी ट्रू होगी इस नेबरहुड के लिए. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. इनमें से जो भी छोटा होगा फॉर दैट डेल्टा बोथ द डेफिनेशन वुड बी ट्रू. इफ डेल्टा इज इक्वल टू minimum of delta 1 and delta 2, then f of x minus L is less than epsilon when x minus a is less than delta, and also f x minus L definition 2 will be also true, inequality 2 will be also true for this delta, okay, x minus when x minus a is less than delta, okay, instead of delta 2, okay, because we have taken delta is equal to minimum of delta 1 and delta 2, right? So now further what is your this difference, okay, you just keep this thing in your mind, okay, 1 and 2, okay. So this is done, okay. Now we are going to do something to make these two number equal, okay. So L minus L dash can be written equal to L minus fx plus fx minus L dash. कुछ नहीं किया, you just added fx and subtracted fx, okay. So if you subtract them we get 0 and we get back this modulus, right? So it could be written in this way. Further we know a plus b is less than equal to mod a plus mod b, right? So this, consider this a and consider this b, so we can write it as it is less than equal to L minus fx plus fx minus L dash, right? So again you see if a minus b is equal to it is equal to b minus a in mod, okay. We know the modulus function behaves properties of modulus function, so this is the property of modulus function, so we can write it as fx minus L, these are both equal, so we can replace this by this, and plus fx minus L, right? So we know by using 1 and 2, okay, this is less than epsilon and this is less than epsilon, okay, when x minus a is less than delta, okay. Just keep these number 3 and 4 because we have already denoted 1 and 2 earlier inequality by 1 and 2 earlier inequalities. So this is 3 and 4, okay. Actually we are not using 1 and 2, so you can just erase them and give this number 1 and 2, okay. So therefore L minus L dash is less than 2 epsilon, right? So since epsilon is something very small number, okay, it could be 0.000001, okay, so this difference must be smaller than this, okay.
अगर ये इससे भी छोटा हो जाता है तो वी कैन टेक एप्सिलॉन 0.00, बहुत छोटा नंबर ले लेंगे, ये इससे भी छोटा होगा। तो इट मीन्स ये बहुत ही छोटा नंबर है, तो इट मीन्स ये उस छोटे नंबर से भी और भी छोटा हो रहा है, बट इट इज़ पॉजिटिव, देयरफॉर इट वी गेट दैट इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, सो वी कैन राइट सिंस epsilon can be sufficiently or infinitesimally small, therefore L minus L dash is equal to 0, which implies L minus L dash is equal to 0. This implies L is equal to L dash, therefore limit is always unique. ओके, तो एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट? ओके, so our supposition is wrong. Whatever we have supposed, so both the limit are equal. Okay, so this is the uniqueness of limit. Just remember this concept, remember this result, right? Okay, let's move further now and let's do something which is called Cauchy's criterion. Okay, Cauchy's criterion. Yes, this is generally most of the time this criterion is used to prove that limit does not exist. Okay, और ये चीज़ ये प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, हम वी कैन प्रूव दैट लिमिट बाय द डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वी कैन प्रूव दैट लिमिट इज एग्जिस्टिंग, बट दिस क्राइटेरियन is very useful when we want to show that limit does not exist of certain function. Okay, so see what does this criterion says. It says the limit of f of x when x is approaching to a exists finitely, okay, if for epsilon greater than 0 there exists a delta or delta neighborhood such that fx1 minus fx2, okay, is less than epsilon. Okay, when x1 comma x2 belongs to delta neighborhood of a, or in place of this you can write or x1 minus a is less than delta and x2 minus a is less than delta, right? So you can write this in place of this. Okay, now, okay, don't forget to write that we are working in dilated neighborhood. Dilated neighborhood means in which a is not the part of, okay, okay, this is greater than 0. Okay, right, so we want to show that, or you can alternatively say if x minus x1 minus x2 is less than epsilon, okay, dash dash dash, when x comma x1 comma x2 belongs to delta neighborhood, then if this is less than epsilon, then limit of fx exists. Okay, if it is not lesser than epsilon or it is greater than 0, then limit does not exist. So oftenly we use this criterion in such a way. Okay, let us try to prove this, and after that we will be illustrating this criterion with the help of one example. Okay, so proof of this example, proof of this result. Okay, so let
let us assume that limit of f of x is equal to L, right? So लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है L के इक्वल है. दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होता है? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड, ओके, सच दैट f of x minus L is less than epsilon when x minus a is less than delta, right? We know this, we have done this several times earlier. Okay, so now you see if, okay, if x1, okay, yeah, so if x1 comma x2 are 2 points, okay, are two number, okay, such that x1 minus a is less than delta greater than 0 and x2 minus a is less than delta greater than 0. देखो ये वाली, ये x के कहाँ के पॉइंट आ रहे हैं? ये वाली सेम वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना. दिस मीन्स they are belonging to this neighborhood. It means x1 and x2 are belonging to this neighborhood, right? It means if they are belonging to this neighborhood, then for these two numbers this definition is true. So we can write therefore f of x1 minus L is less than epsilon, okay, and f of x2 minus L is less than epsilon, okay. दोनों inequality is true, okay. So one more thing I just want to tell you here, okay. So देखो if you are taking epsilon greater than 0, ठीक है, so epsilon by 2 भी कोई नंबर होगा greater than 0, right? ठीक है, इसके लिए भी कोई ना कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ये वाला, ठीक है. तो इफ़ यू आर राइटिंग कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स फॉर एप्सिलॉन बाई 2 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड सच दैट दिस नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ओके. और शुरू में ही अगर इफ़ यू राइट कि फॉर एप्सिलॉन बाई 2 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, इट इज़ ऑल्सो फाइन. बट इफ़ यू राइट कि फॉर एप्सिलॉन greater than 0 there exists a delta such that this is lesser than epsilon by 2, okay, epsilon by 2. I hope you get it. If you if you didn't get it, then I'm gonna tell you one more time, okay. So epsilon is some number which is greater than 0, like half, like 1, okay. 1 के लिए कोई ना कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. देखो अगर 1 है तो 1 ग्रेटर देन 0 है तो इसका हाफ भी, दैट इज़ 1/2, इट इज़ ऑल्सो नंबर, राइट, विच इज़ ग्रेटर देन 0. तो इसके लिए भी अनदर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं कि अगर 1 कोई नंबर है तो हाफ के लिए कोई ना कोई एप्सिलॉन डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस डेफिनेशन इज ट्रू. सो ओके, सो वी कैन राइट कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, for epsilon greater than 0 there exists a delta such that this difference is lesser than epsilon by 2 when this is true, right? So therefore you can write epsilon by 2 here, epsilon by 2 here. हम ये epsilon by 2 क्यों लिख रहे हैं? I'll tell you at the last, okay. So now you see what is ये तो हमारा हो गया, just remember this, okay. Giving this number 1, okay. Now इसका डिफरेंस fx माइनस fx1 माइनस fx2 कितना हो जाएगा? fx1 माइनस l, मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, खुद से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. टोटल कितना रहा? 0, ओके. नो इफेक्ट, नेट इफेक्ट इज 0. सो माइनस fx2, तो कितना हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू, ओके, अगेन दिस इज a, दिस इज b, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन fx1 माइनस l plus L minus fx2, okay. So we know this is lesser than epsilon, okay, strictly lesser than epsilon by 2, and this is also lesser than epsilon by 2. So therefore you can write that this function is
lesser than epsilon, right? So that's why I wrote epsilon by 2, so that it will be combinedly, it is getting combined, so that it would get combined to become epsilon only. Okay, तभी वहाँ पे epsilon by 2 लिया था. Okay, तो we have proved this result, right, that if limit exists, then this must be difference of these two numbers, or these two, okay, fx1 and minus fx2 must be lesser than epsilon when x comma x1 comma x2 belongs to dilated neighborhood of delta neighborhood of A. Okay, so you can write this thing in your notebook. Okay, so this was the Cauchy criterion. Now we are going to take one example on Cauchy criterion, right? So let us take one example on Cauchy criterion. Now prove that, okay, prove that limit x tending to a 1 upon x minus a does not exist. Okay, so we are going to prove this. Okay, कैसे प्रूव करेंगे? So कोई एप्साइलन ले लेंगे ग्रेटर देन 0, ठीक है, एप्साइलन ग्रेटर देन 0 लेंगे, और लास्ट में ये शो कर लेंगे कि f of x1 माइनस f of x2, दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि ये कितना आ जाए, ग्रेटर देन एप्साइलन आ जाए, ठीक है. और एप्साइलन थोड़ा कुछ ऐसा लेंगे पर्टिकुलरली, ठीक है, अपने हिसाब से ले लेंगे, सच दैट जैसे कि 0 और 1 के बीच में ले लेंगे एप्साइलन, ठीक है, और हम लास्ट में शो करेंगे कि ये वाला जो डिफरेंस है ये हमेशा एप्साइलन से ग्रेटर ही आ रहा है. ओके, सो आई एम गोना टेल यू हियर. ओके, सो हियर f of x कितना है यहाँ पे, 1 over x माइनस a है. ओके, फाइन. एंड देखो अगर एप्साइलन होगा कोई, फॉर एप्साइलन अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट होती तो क्या होता, एप्साइलन फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, ओके, ग्रेटर देन 0 such that difference is lesser than epsilon when x belongs to delta neighborhood. But we have to prove something else in this. Okay, so I'm going to take epsilon first. Okay, so let epsilon be greater than 0 however small, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, however small. Okay, and let delta v ग्रेटर देन 0, ठीक है, डेल्टा कोई नंबर है. ओके, सो अभी हमें ये प्रूव नहीं किया है कि इस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट कर गया है. वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट डेल्टा इज सम नंबर विच इज ग्रेटर देन 0. अगर डेल्टा कोई नंबर है ग्रेटर देन 0, ठीक है, वी कैन फॉर दिस डेल्टा वी कैन चूज, ओके, वी कैन चूज अ नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर n, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. ठीक है, देखो ये कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, राइट, डेल्टा, तो डेल्टा के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर n सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा, राइट. ओके, और यू कैन राइट और n इज ग्रेटर देन 1/डेल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल करके. ठीक है, सो अब देखो if 1/n इज लेस देन डेल्टा, तो 1/2n 1/n से भी छोटा होता है. ठीक है, ओके, एंड इट इज लेसर देन डेल्टा अगेन. ओके, नाउ इफ वी टेक x1 इज इक्वल टू x1, अब देखो इफ यू टेक x1 इज इक्वल टू
a प्लस 1/n और x2 ले लोगे a प्लस 1/2n, तो f(x1) कितना हो जाएगा, ठीक है, f(x1) वुड बी इक्वल टू, देखो x की जगह कितना है, a प्लस 1/n माइनस a, ठीक है। f ऑफ x है क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x माइनस a, तो x की जगह ये लिख दोगे एंड माइनस a, ये कैंसिल हो गया और ये कितना टोटल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और सिमिलरली f ऑफ x2 कितना हो जाएगा, 2n। अब देखो इफ आई सब्सट्रैक्ट, सो नाउ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ओके, ये कितना हो जाएगा, n माइनस 2n विच इज इक्वल टू माइनस n, मॉड माइनस को खा जाता है, ठीक है, इट कंज्यूम्स माइनस साइन, सो इट इज इक्वल टू n। सो n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इट मीन्स ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो इट मीन्स दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट। तो इफ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, ओके, तो इसके लिए कोई भी डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट ये वाला डिफरेंस इससे छोटा हो जाए, दो दिस मीन्स इट मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप ये ले लो, ओके, शुरू में ये लिख दो, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन, ओके, सो लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, और यू कैन टेक लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, इतना ले लो बस, ठीक है, या फिर और यू कैन टेक और लेट एप्सिलॉन बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ओके, इसके बीच में भी कोई नंबर होगा वो भी उसके लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यू जस्ट सिंपली टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, दिस इज वेरी सिंपल, ओके। फिर इस एप्सिलॉन के लिए you can write since epsilon was equal to 1, therefore f of x minus f of x2 is greater than epsilon, therefore limit of f of x does not exist, okay, and with this you finish the, so this is you finish the you have solved this problem, okay, you have proved that limit does not exist. So this is how we use the Cauchy criterion, okay. You just try one more few more examples or few more problems on this. If you do not get them, okay, if you do not understand how to solve Cauchy criterion, okay, ask me, I'll tell you how to do them, okay. So I just gave you one example, okay, to make it clear how Cauchy criterion work, right. So try from yourself now, okay, and see you in the next video.